Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So today we will do exercise of lesson 16, water, a precious resource of science. Okay, so let's start from question number 1. Mark T if the statement is true and F it is false. If it is false. So let's see. Number A. The fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. तो हमारे वर्ल्ड में जितनी भी रिवर्स हैं और लेक्स हैं वहाँ जो फ्रेश वाटर है ना, वो ग्राउंड में जो प्रेजेंट है फ्रेश वाटर है ना, उससे कम है, ये यहाँ पूछ रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, है ना. ग्राउंड का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा है रिवर्स और लेक्स से. ठीक है. सेकंड, फ्रेश वाटर की बात हो रही है ना. सेकंड, वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. तो सिर्फ रूरल एरियाज के लोग वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, सिटी के लोग भी करते हैं, है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन द फील्ड्स. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि सिर्फ रिवर्स से ही इरीगेशन का काम नहीं होता है, कैनल से भी कराया जाता है और साथ साथ ग्राउंड वाटर भी. ज़्यादातर खेतों में देखो आजकल बोरिंग हो गई है ना, तो ग्राउंड वाटर से भी इरीगेशन का वर्क होता है. ओके. नेक्स्ट, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. सो यस, दिस इज ट्रू. वाटर का अल्टीमेट सोर्स है रेन, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज. ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है ना, कि जैसे हम लोग इतना सारा ग्राउंड वाटर निकाल तो लेते हैं हैंड पंप, वेल या बोरिंग के माध्यम से, पर फिर उतना ही लेवल वहाँ नीचे अंदर जो होता है ना, वाटर लेवल उतना ही कैसे हो जाता है, कैसे रिचार्ज होता है. तो उसका यहाँ आंसर दिया हुआ है, देखिए. द ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन, है ना. इनफिल्ट्रेशन मीन्स सीपिंग ऑफ वाटर, मतलब जितनी भी बारिश होती है आप देखेंगे पूरा पानी सीपेज होकर अंदर चला जाता है ना. और तो और रिवर्स, लेक्स, है ना, इन सब से भी वाटर सीपेज होकर अंडरग्राउंड जाता है. ओके. नाउ सीपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इनटू द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. There are 10 tube wells in a lane of 50 houses. What could be the long-term impact on the water table? So let's see the answer. The effect on the water table depends on the replenishment of underground water. Only 5 families will share a tube well. The water used for daily domestic purposes will not affect the water table. But if there is shortage of rains, the water used by the family will not replenished and water table will fall down. Okay. Now question number 4. You have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? आपको एक गार्डन मेंटेन करने के लिए पूछा गया है, ठीक है, या कहा गया है, तो आप कैसे वाटर का यूज मिनिमाइज करेंगे, कम से कम वाटर यूज करेंगे. सो टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर वी विल यूज द ड्रिप इरिगेशन, जिसके बारे में मैंने लेसन में आप लोगों को बताया है. which throw the water at the base of plants. We will check the leakage in the water pipes and arrange small pits for rainwater harvesting. The collected rainwater will be used later. Okay. Now question number 5. Explain the factors responsible for the depletion of water table. Depletion मतलब कमी की बात हो रही है ना. So various factors responsible for the depletion of water table are: फर्स्ट, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. इन सब के बारे में हम लोगों ने बातें की हैं लेसन में, आप देखेंगे वीडियो तो समझ में आएगा. ठीक है. So demand of water has been increased by the increased population. As the number of humans increase, the consumption of water also increases. Okay. Second, increases industries. All industries need water. As the number of human population increase, the number of industries are also increased, which definitely increases the consumption of water. Okay. Third, lack of water conservation techniques. Main source of water on earth and for the underground water is rain. The water of the rain is conserved can increase the groundwater level, but this is not done due to lack of water conservation
conservative techniques. Okay, and fourth, agricultural activities. India is a country which depends on agriculture. The land used for cultivation has increased, so the consumption of water for agriculture has increased. Irregular rainfall has increased the consumption of groundwater. This has increased the depletion of groundwater. Okay, now question number 6. Fill in the blanks with the appropriate answers. Blank दिए हैं देखें. People obtain groundwater through wells and hand pumps. Okay, three forms of water are solid, liquid, and gas. Okay, third, the water bearing layer of the earth is aquifer. And fourth, the process of water seepage into the ground is called infiltration. Okay, now question number 7. Which one of the following is not responsible for water shortage? Water shortage के लिए कौन responsible नहीं है? Rapid growth of industries, ये तो है, अभी हमने पढ़ा. Increasing population, ये भी है. Heavy rainfall, ये नहीं है. Mismanagement of water resources, ये है. तो आपका आंसर होगा heavy rainfall. Okay, now question number 8. Choose the correct option. The total water in the lakes and rivers of the world remains constant. Under the ground remains constant. In the seas and oceans of the world remains constant. Of the world remains constant. So the correct answer is of the world remains constant. Okay, now question number 9. Make a sketch showing groundwater and water label it. ये देखिए, ये ड्राइंग आपको बनाना है, ये बुक में भी दिया हुआ है ना. इसे आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ड्रॉ करना है. ओके, सो हियर लेसन 16 is completed. So write this exercise in your fair copy. Tomorrow we will start lesson 17. Okay.